Hello students, welcome back to my channel. Today I am going to discuss circulatory system according to class 6. You have your unit test coming and there recently you have studied circulatory system. When you say what is circulatory system? Simple, see the important definitions here. A transport system that transports various substances like food, water, gases, hormones, secretions, and waste from one part of the body to the another is called circulatory system. What is circulatory system? A transport system that transports various substances like food, water, gases, hormones, secretions, and waste from one part of the body to another, right? Arteries. What are arteries? They are thick walled blood vessels that take blood away from the heart and carry oxygen rich blood to the different parts of the body. Arteries are those blood vessels, they carry oxygenated blood from heart to different parts of the body. I hope it's atria. Two uppermost chambers of the heart, they receive blood from the various parts of the body. That is the two upper they receive, they are known as atria or the atriums. Blood platelets, they are very small colorful blood cells that helps in clotting. Blood, they have the three blood corpuscles, RBCs, WBCs, and blood platelets. Blood platelets, they help in clotting. RBCs, they have hemoglobin, they help in transporting oxygen from lungs to different parts of the, and WBCs, they protect our body from different diseases, right? Capillaries, extremely thin walled blood vessels present in the tissues between arteries and veins. Means capillaries are those thin vessels that they connect arteries and veins together. They are those thin blood vessels that connect the arteries and blood vessels both together. Here you see, this is the artery coming from heart, this is the vein. Here they are divided into fine capillaries. यहाँ से impure blood आता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं और न्यूट्रिएंट से एब्जॉर्ब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में चला जाता है और फिर वेन्स से ये वापस हार्ट में जाता है. तो ये कैपिलरीज होती हैं. कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स को जोड़ती हैं. ठीक है बेटा. हार्ट बीट, वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन and expansion of the heart, that is called the heartbeat. Heart, it is the pumping organ that pumps out blood force so that blood reaches to every part of the body. What is pumping organ of the heart? It pumps the blood so the blood reaches. जब हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बॉडी से ब्लड हार्ट में आता है. जब एक्सपेंड करता है तो ब्लड हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है. व्हाट इज पल्स? वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन. वेव ना, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन. जब वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन फेल्ट इन द आर्टरी. अब हाथ में अपनी आर्टरी में देखिएगा, इस जगह आपको आप अंगूठे की तरफ यहाँ हेल्प करिए तो आपको देखिए पुल्स रहेगा. वेव ऊपर नीचे होते आपको दिखाई देंगे. आप यहाँ पर बस करेंगे तो देखिए वेव ऊपर नीचे इस अंगूठे की तरफ यहाँ पर आप हाथ रख के देखिएगा, आपको महसूस होगा. थ्रोबिंग यू विल फेस, इसी को कहते हैं पल्स रेट. पल्स रेट से डॉक्टर पता करता है कि आपको क्या बीमारी है. इवन जो पहले के लोग वैद्य राज थे, वो पल्स से आपकी शरीर की पूरी जानकारी आपको दे देते थे, राइट? So wave of contraction, expansion or throbbing felt in the artery due to pumping action. RBCs that contain red pigment hemoglobin that transport oxygen. Stethoscope, a medical device used for listening to the sound of heart. Veins, they are thin walled blood vessels which take blood towards the heart and carry carbon dioxide. Ventricles, lower chambers of the heart give out blood away from the heart. White blood cells, color blood cells that protect the body against disease. This I told you already. Okay, just let us go through the exercises. Here I gave you all these. They are the definition. What are the main important words you can get for the definition? Arteries, atria, means atrium, blood platelets,
capillaries, circulatory system, heartbeat, heart, pulse, red blood vessels, stethoscope, veins, ventricles, and white blood cell. Now, the fluid part of the blood is called plasma. What is hemoglobin? Hemoglobin is present in RBC, WBC, plasma, blood. Hemoglobin is present in RBCs. Blood vessels that carry oxygen-rich blood from heart to all parts of the bodies. Blood vessels that carry oxygen-rich blood from heart to all bodies, they are arteries, veins, RBC, WBCs. They are arteries. Blood vessels that carry carbon dioxide blood to the heart, they are known as veins. Veins allow blood to flow only towards the heart. वेन से ब्लड हार्ट की तरफ जाता है, आर्टरी से ब्लड हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरफ जाता है. एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी सेल्स टेक्स प्लेस बाय कैपिलरीज. अभी आपको दिखाया था कि एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स जो होते हैं बॉडी सेल्स में, वो ये जो कैपिलरीज होती हैं, इस कैपिलरीज से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होते हैं. जो भी बॉडी में फंक्शन होता है, डाइजेस्टिव मटेरियल होते हैं, जैसे आप ये देखिए यहाँ पर, ये आपका ब्लड बॉडी में फ्लो हो रहा है, तो इसी से जब ये डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड वेसल्स जाती हैं, तो जैसे जो आपका फूड है वो इसमें एब्जॉर्ब होता है, और जो चीज़ें ब्लड को निकालनी होती हैं, जो कि आपकी फीकल मैटर के साथ शरीर से बाहर जाना चाहिए, वो चीज़ें इससे इसमें आ जाती हैं. इससे डाइजेस्टेड फूड इसमें आता है. जब ब्लड आपके किडनी में फ्लो करता है, तो यूरिक एसिड जो है आपकी बॉडी से फिल्टर होकर के यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, और सेल्स में जाता है. तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, जो सेल्स को चाहिए, मतलब न्यूट्रिटिव मटेरियल्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स और प्रोटीन्स, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, ये सेल्स अब्जॉर्ब करता है, और जो चीज सेल्स को नहीं चाहिए होते हैं. और गैसेस जो होती हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब ब्लड लंग्स में जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है और ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करता है. ऑक्सीजन पूरे सेल्स में सर्कुलेट होते हैं, पूरी शरीर में, तो हर सेल्स ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज है. इसीलिए कहते हैं योगा करिए, व्यायाम पे, जितना ज्यादा बॉडी में होगा तो उतना ही ज्यादा आपका फूड जो है वो ऑक्सीडाइज होगा. नाउ ब्लड पंप फ्रॉम हार्ट टू द एंटायर बॉडी थ्रू बाय ventricles. Human heart has how many chambers? Human heart has 4 chambers. Human heart has 4 chambers. Heart is the pumping organ of the body. Yes, it is true. Heart is the pumping organ of the body. WBC transports oxygen? No. False. WBC protects body. Which transport oxygen? RBCs transport oxygen. It is a false statement. अगर करेक्ट स्टेटमेंट आता है तो RBCs transports oxygen. Pulmonary artery carries carbon dioxide rich blood? Yes, it carries. Pulmonary vein carries oxygenated blood. Arteries do not have any walls? Yes, arteries do not have any walls. Arteries में walls नहीं. Walls किस में होते हैं? Walls में veins में होता है. Veins have walls. Blood group O is the universal acceptor? Yes, blood group O is the universal acceptor. No, it is false. Blood group AB is universal acceptor and blood group O is universal donor. ये acceptor की जगह यहाँ पर होगा donor if you are asked to correct the statement. Now fill in the blank. Hemoglobin is present in red blood cell. Arteries and veins are joined by a network of capillaries. Rhythmic expansion and contraction of the heart is called heartbeat. Blood vessels that carry blood from organs to the heart is called veins. Now, who pumps blood? Heart pumps blood. Oxygen-rich blood? Pulmonary vein. Carbon dioxide-laced one? Pulmonary artery. Clotting of blood? Blood platelets. Protection against diseases? WBC. WBC protect the body against disease. See, we have discussed the important things. Now, instruments to listen to the heart of a person. Instrument to listen to the heartbeats of a person. That instrument is known as stethoscope. Number of heartbeats per minute. It is heartbeat rate called. Universal donor, O blood group. Universal acceptor, AB blood group. Person who gives blood, donor. Person who receives blood, receiver. Donor, acceptor. Now, name the device used by doctors to listen our heartbeat. It is
Stethoscope. What is the main function of heart? To pump the blood to the different parts of the body. Which arteries carries carbon dioxide rich blood? Pulmonary artery. Which vein carries oxygen rich blood? Pulmonary vein. Name the largest artery in the body. Aorta. Aorta. Which blood cells are important for immunity? WBCs. What is the function of valves? The function of valves in the veins to prevent backward flow of the blood. What it is? To prevent backward flow of the blood. What will happen if the blood platelet counts drops in the vein? See, if the blood platelets comes down in the group, then what happens? 8-1. You see, dangerous internal bleeding can occur in our body, and in severe cases it can bleeding into the brain and can be fatal. मतलब बहुत ही खतरनाक हो सकता है अगर ब्लड प्लेटलेट्स का देखिए, डेंगू में भी ब्लड प्लेटलेट्स बहुत काउंट होती हैं, तो इससे इंटरनल ब्लीडिंग ऑर्गन में स्टार्ट हो जाती है। तो इंटरनल ब्लीडिंग होने से बॉडी के मल्टीफिलर ऑर्गन के चांसेस होते हैं और पर्सन ज़्यादा तेज। आप ना डेंगू से बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं, बहुत डेथ्स होती हैं डेंगू से। डेंगू में भी प्लेटलेट्स एकदम से, इवन वायरल फीवर में भी कभी कभी जो है प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हैं। स्टेट टू फंक्शंस ऑफ ब्लड, फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस, transport of excretory products. They are all the functions of the there. Why do arteries have thick? Arteries have thick because they have to bear the pressure. Arteries have thick wall because blood flows with the high pressure in arteries. Why? Because blood flows with high pressure in the arteries. What is a pulse? That we have already discussed here. What is a pulse? Wave of contraction and expansion. See, pulse, wave of contraction and expansion or thrombing felt in the artery due to pumping action of heart. That is called pulse. Which blood group is universal donor? Universal donor is blood group O. What is the meaning of Rh positive blood group? Rh positive blood group means the presence of the particular antigens on the surface of RBC. If particular antigens are present on the surface of the RBCs, then we say that blood group is Rh positive. 80 to 85% they are Rh positive only. Only 10 to 15% population in our country that is the Rh negative. If these proteins are absent, then we say that it is Rh negative. Person with blood group A can receive blood from which group? They can receive blood from A and O only. Sometimes doctor injects medicines directly into our blood. Where do they inject it? In the artery or in the vein? Explain. See, when आपके बॉडी के बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है? आर्टरीज बॉडी के अंदरूनी हिस्से में होती हैं और वेन्स जो होते हैं बाहरी पर। जो डॉक्टर्स इंजेक्शन लगाते हैं वो वेन में लगाते हैं। क्यों? वेन से ब्लड जो है वापस हार्ट में जाता है और हार्ट से जाने के बाद हार्ट में जाने के बाद फिर वो पूरी बॉडी में इंजेक्ट होता है। और अगर हम वेन्स में नहीं, अगर मेडिसिन देंगे तो मेडिसिन डाइजेस्ट हो जाएगी, वो ब्लड में देंगे। अगर ब्लड में जाएगा तो जिस जगह उसकी जरूरत है वो वहां पर जल्दी पहुंचेगा। Why do capillaries in the human body do not have walls? क्योंकि कैपिलरी का फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। यहाँ पर ब्लड फ्रॉम एक जगह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, एक्सचेंज ऑफ डाइजेस्टिव फूड, एक्सचेंज ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जितनी भी चीजें हैं एक्सचेंज मटेरियल। तो यहाँ पर वॉल्व नहीं, अगर वॉल्व होंगे तो ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। अगर वॉल्स होंगे तो सेल्स और टिश्यूज में ट्रांसफर और ट्रांसपोर्टेशन जो है ठीक से नहीं हो पाएगा। What is the significance of heart having 4 chambers? Due to the presence of the 4 chambers in the heart, see what happens. It is very easy for us that we can see heart is having here the heart, generally heart in the it's a muscular organ, it pumps continuously the heart. It is as you close your fist. See, this is the shape and size of the heart, triangular portion. Here you see this is the triangular portion, this shape of the heart which is present over here. Now this triangular shape of the heart which is it has ये like this, इस तरह से ये atrial, ये ventricle और ऊपर atrial होता है। इसमें क्या होता है? ये राइट ऑरिकल,
left auricle, right ventricle, left ventricle. It has 4 chambers. ये बीच में कॉमन चैम्बर्स है. राइट साइड ऑफ द ब्लड कैन नॉट गो टू द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्लड कैन नॉट गो टू द राइट साइड. ठीक है. राइट साइड ब्लड फ्रॉम वेना केवा, अपर वेना केवा एंड द लोअर वेना केवा. ये है आपकी लोअर वेना केवा. ये वेना केवा है एंटीरियर सर के ऊपर से, और ये सर के नीचे से, हार्ट के आपके चेस्ट के नीचे से बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके, ये पूरा ब्लड कलेक्ट करके किस में आता है? राइट एट्रियम में आता है. राइट एट्रियम में से ब्लड पास होता है लेफ्ट एट्रियम में. लेफ्ट एट्रियम से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये दोनों लंग्स में जाते हैं. तो अगर हार्ट 4 चैम्बर नहीं होगा तो प्रॉपर फ्लो ऑफ ब्लड मेंटेन. चैम्बर यहां से ब्लड लंग्स में गया और लंग्स से पल्मोनरी आर्टरी के ब्लड थ्रू फिर आपके लेफ्ट ऑरिकल में आया. तो ये आपका एक साइकिल. जब ये चैम्बर्स 4 अलग हैं तभी तो ये पॉसिबल है. अगर ये 4 चैम्बर्स अलग नहीं हुए तो ये सर्कुलेशन पॉसिबल नहीं होगा. यहाँ कलेक्ट हुआ, ये कलेक्शन चैम्बर है, ये चैम्बर है लंग्स में ब्लड भेजने के लिए, ये चैम्बर है जो लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ से ब्लड लंग्स से ऑक्सीजनेट. ये ब्लू ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, रेड ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. यहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से गया, पल्मोनरी आर्टरी से गया, ये है ये और ये. तो इस पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड लंग्स में ऑक्सीजनेट हुआ. ऑक्सीजनेट के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आया लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा अराइज हुआ. ये एरोटा देखिए 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, 2 में, ये दो में हुआ, 2 से ये 3 पार्ट में. ये 3 पार्ट, एक आपके हेड में जाता है, एक आपके हाथ की तरफ जाता है, और एक हाथ से नीचे. ये तीसरी जो है वापस आपके आगे नीचे डोर्सल एरोटा बनाती हैं, जो कि बॉडी को ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं. जैसे कि आप देखते हैं इसमें, ये एक यहाँ से वेन आप देखिए, एक यहाँ से हार्ट से निकलती ऊपर गई, एक यहाँ से दोनों तरफ गई, और एक जो नीचे जाती है ये यहाँ पे मिलके, तीनों मिलके ये डोर्सल एरोटा बनाती है. यहाँ पर ये इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगी, और फिर यहाँ से ये दोनों पैरों में आएगी. समझ आए? तो दैट इज व्हाट हाउ इट happens. I hope you are able to get it. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. Again, we will meet in the next video. Thank you.